सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरजीत कौर। तो कैनेडा दे विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिनती आए साल वधदी ही जा रही सी ते काफ़ी समय तो सरकार दे वल्लों योजनावां भी बनाईयां जा रही सन ते आखिरकार हुण सरकार दे वल्लों अपना फैसला सुना दिता गया है। हाल ही दे विच इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर दे वल्लों ऐलान किया गया है कि कैनेडा अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के देश विच दाखले ते 2 सालां लई राष्ट्रीय कैप लगा रहा है ते जिन्हां प्रोविंसां ने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दाखले दे विच सब तो वध अस्थिर वाधा देखा है उन्हां नूं दूजे प्रांतां दे नालों विद्यार्थियों के दाखले दे विच ज्यादा कटौती करनी पवेगी। दस दे कि मंत्री ने कहा कि यह फैसला आने वाले अंतरराष्ट्रीय दे चंगे भविख दे लई लिया गया। इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने सोमवार नूं ऐलान किया कि कैनेडा अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के देश विच दाखले ते राष्ट्रीय कैप लगा रहा है। मिलर ने लिबरल कैबिनेट रिट्रीट ते बोलदियां कई होर पाबंदियां दा ऐलान किया, जिस बारे उन्होंने कहा कि अगले 2 सालों विच दाखले विच 35% की कमी आवेगी। मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि फैसला आने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के चंगे भविख लई लिया गया है तां जो इत्थे आके होर वधिया तरह दे नाल अपनी सिक्ख्या हासिल कर सकन। International students are a valuable asset to this country. They are bright, young individuals that enrich our communities and bring significant social, cultural, and economic benefits. They deserve the best. They deserve world-class academic experiences that they sought out and hoped for. And Canada is renowned for that. It's unacceptable that some private institutions have taken advantage of international students by operating under-resourced campuses, lacking supports for students, and charging high tuition fees, all the while significantly increasing their intake of international students. मिलर ने कहा कि कैनेडा दे विच अस्थाई निवास दे टिकाऊ पद्धर नूं कायम रखण लई नाल ही यह यकीनी बनाउण लई कि 2024 लई कैनेडा विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिनती विच कोई होर वाधा ना होवे। असीं 2 सालां दी मियाद लई एक राष्ट्रीय अर्जी दाखला कैप निर्धारित कर रहे हैं। मिलर ने कहा कि 2024 लई कैप दे नतीजे वजों लगभग 3,64,000 प्रवानित अध्ययन परमिट होने की उम्मीद है कि जिस नाल 2023 तो 35% की कमी आवेगी। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि कैप राष्ट्रीय होने के बावजूद इसनूं ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल लागू किया जाएगा। जिन्हां प्रोविंसां ने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दाखले विच सब तो वध अस्थिर वाधा देखा है उन्हां नूं दूजे प्रांतां नालों विद्यार्थियों के दाखले दे विच ज्यादा कटौती करनी पवेगी। A temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. मिलर ने अगे कहा कि कुछ प्रांतां विच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कटौतियां देखण नूं मिलणगीਆਂ। मिलर ने कहा कि वह पहला ही ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया दीआं सरकारां नाल लाभकारी चर्चा कर चुके हैं। इमीग्रेशन रिफ्यूजिज एंड सिटीजनशिप कैनेडा हरेक सूबे और खेतर नूं कैप का एक हिस्सा निर्धारित करेगा जो फिर मानयोग सिक्ख्या संस्थावां विच अनुमति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की फंड नूं वंडेगा। We are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. मिलर ने कहा कि यह कैप ग्रेजुएट पद्धर की पढ़ाई के विद्यार्थियों ते लागू नहीं होवेगी जिस विच मास्टर अते डॉक्टरल विद्यार्थी शामिल हैं ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। Applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. At the same time, the cap will not apply to students in graduate levels of studies, including master's and doctoral students. Those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels will also be exempt. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। As of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। In the coming weeks, we will be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।